Next question, question number 21. With reference to the Indian history, Alexander A.H. Longhurst, Robert Seville, James Burgess, and Walter Elliot were associated with what? So all these gentlemen were associated with the archaeological excavations. Now, why did this question come? Because एक article आया था newspaper के अंदर, which I have added here in Times of India and many other papers की ASI Archaeological Survey of India unearths 2,300-year-old terracotta coffin at Pallavaram, that is Tamil Nadu. So, therefore, these names of the British era archaeologist was asked by UPSC, right? Usually, Alexander Cunningham and all the other famous archaeologists are asked, but this is where the South Indian excavators are something which aspirants do not look into. Mainly, our focus is always on the Harappan civilization and Mohenjo-daro. Therefore, we ignore these names. So, UPSC, just to bring an element of surprise, has asked this question based on the southern archaeologist, right? So, next question. Yeah, consider the following pairs. State diya hai, and what is so based on the location, you need to find out the correct pair, whether the description given is correct or not. Base Nagar, Shaivite cave shrine, Bhaja, Buddhist cave shrine, and Sittan Vasal, Jain cave shrine. So only two of them are correct because Besa Nagar, also known as Vidisha, ये विदिशा से सबको पता है नाम. अगर विदिशा पूछा होता तो शायद लोगों ने इसको गेस कर दिया रहता, बट इसका बेस नगर इज वन मोर name, and on the outskirts of Base Nagar stands a quaint Heliodorus pillar dedicated to god Vishnu and not Shiv. Okay, set up by Greek named Heliodorus, who is said to have adopted Hinduism and became a disciple of Lord Vishnu. Okay, so that's why they asked this question a bit googly, I would say, because Vidisha everyone knows, but Base Nagar नहीं पता है, तो इसलिए वो incorrect है, बाकी दोनों भी correct है. Bhaja Cave, right? So it is a group of 22 rock cut caves नियर लोनावाड़ा, पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र. तो वहां पर ये कुछ केव्स आपको हिनायना बुद्धिज्म सेक्ट के मिलते हैं आपको महाराष्ट्र में. और जो थर्ड है सित्तान वसल केव्स इन पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु बिलोंग्स टू द जैनिज्म, तो वो भी करेक्ट है. सो देयरफॉर ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट, 2 and 3. ओके, तो उतना ही सब करेक्ट है. राइट, गोइंग फॉरवर्ड नाउ. Yes, National Handloom Day. So UPSC has very intelligently grouped current affairs angle and also the historical angle, right? So from 2015, 7th August, we do celebrate as National Handloom Day. ये हमारा recent, I would say 7 years is recent as compared to history topic. So 2015 से 7th August was declared as National Handloom Day. Why? Because it was in 1905, जो आप सबको पता है कि स्वदेशी movement was launched on 7th August. So therefore, statement 1 is also correct, and statement 2 is also correct, and statement 2 is also a correct explanation for statement 1, right? तो इसको celebrate करने के लिए हमने 7th August National Handloom Day रखा है. So therefore, A, both 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. So it was a relatively simple one if you knew statement first at least, right? तो आपको statement 2 तो खैर ये सबको पता ही है, but अगर 7th August का पता होता तो फिर दोनों वैलिडेट कर सकते हैं, right? Anyways, going forward. So consider the following statements in respect to the national flag of India according to the Flag Code of India 2002. Why this question? Again, we had celebrated Har Ghar Tiranga, if you recall, right? Har Ghar Tiranga campaign during 15th August. The Prime Minister called upon the citizens to unfurl the national flag atop their houses, their offices, etc. So इस कंटेक्स्ट में सारे न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू के अंदर ये फ्लैग कोड के बारे में आर्टिकल्स आया था, right? So therefore, UPSC intelligently again ask you about flag code of India. This is mentioned in many books, many of the even India yearbook जो बहुत लोग रेफर करते हैं उसमें भी फ्लैग कोड के बारे में दिया रहता है. And even last year it was in news because one exemption was made कि पॉलिस्टर फ्लैग्स को
अलाउ किया जाएगा इन द फ्लैग कोड. There was some criticism by some environmentalists कि पॉलिएस्टर को क्यों आपने अलाउ किया, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता है, बट that was the only amendment which was made in 2022. Therefore, it was in news. And one more reason is हर घर तिरंगा campaign. So statement one क्या दिया है? One of the standard sizes of national flag is 600 mm to 400 mm. The ratio of the length to the length to height ratio of the flag shall be 3:2. तो ये सही है. Okay, this is definitely right. And but if you look at the standard sizes, the 600 mm or 400 ऐसा नहीं है, right? It is either in these dimensions, that is 6300 into 4200. और ये एस्पेक्ट रेशियो 3:2 का हर जगह पे मेंटेन रखा है. इफ यू कैन जस्ट लुक एट द रेशियो बाय डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम, 3:2 का रेशियो हमने ये रखा है, और ये स्टैंडर्ड डायमेंशन ये टोटल 8 है, right? Total 9, we can say 1, 2, 3, 4, 5. Total 9 dimensions are being specified in the national flag code. Okay, so therefore statement 1, yeah, is incorrect, but statement 2 is correct. Okay, 3:2 वाला जो रेशियो है वो हमेशा मेंटेन रहता है. You might have seen that already. Okay, so yeah, next question. Consider the following statements in respect to the constitution of the day. The Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India. Absolutely not. ये तो statement 2 था. कोई भी इसको incorrect बता देगा, क्योंकि ये पता है कि 26 November 1949 क्या है? It was the date when our Constitution was adopted. तो तब तक Constitution already adopt कर चुके थे. So why on earth would we have a constituent assembly to draft a constitution when the constitution already been made by 1949, right? Or 26 Jan ko 1950, just 2 months down the line, we enforce the constitution, right? That is a republic day. So ये तो अगर आपको basics पता है constitution के, तो absolutely you should be able to eliminate this option too. Yes, so 1 तो correct है. संविधान दिवस हम 26 नवंबर जब ये हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट, 1949, दैट इज द डे वी सेलिब्रेट एज कॉन्स्टिट्यूशन डे टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजंस, राइट? सो देयरफॉर दिस वाज, आई वुड अगेन से, relatively easy in context of the polity questions. Next is 26. Consider the following statements. Yes, statement number 1 is Switzerland is one of the leading exporters of gold in terms of value. Okay, in terms of value पूछा ना, very carefully you have to read it. Statement 2 is Switzerland has the second largest gold reserves in the world. So yes, it is definitely one of the leading exporters of gold in terms of value. But जब reserves की बात आती है, तो USA का gold reserve सबसे highest है, followed by Germany and Italy. Right? So ये statement 2 is wrong. So therefore C is right. Means first statement ये correct है. Switzerland का $86.7 billion in gold का export है, right? And in terms of the gold reserves, USA, Germany and Italy are the top 3 countries. Okay. So now अभी question तो naturally आएगा कि ऐसे type के question कहाँ से आ रहे हैं? तो ये economic geography के based questions है. So therefore, whenever you read world geography, you need to ensure कि जैसे famous gold is always in news, lithium, cobalt, ये UPSC ने पूछा है, right? And many other such rare earth minerals अगर news में आते हैं, तो उसका हमेशा top 3, top 5 ऐसे जो countries है वो हमेशा आपने याद रखना चाहिए. दो यूपीएससी ने पहले काफी साल हो चुके ऐसे इकोनॉमिक क्वेश्चंस पूछे नहीं है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे नहीं, but in terms of countries, I would say, but now they have started to ask once again. Okay, so please try to keep in mind similar trends for other minerals for upcoming examinations. Okay, next is yeah, this is again I've added a chart of the gold reserves. हाँ, तो इंडिया का भी मैंने additional add कर दिया है. So if you look at the chart, so India comes somewhere 9th. So yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th. Okay, 10th we are, India is 10th. As per the gold reserves in the world. तो अगर किसी ने इंडिया के बारे में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए. It just comes after Japan. Okay, तो USA, Germany, Italy, France, Russia, China, Switzerland, Japan and India. तो इंडिया के बाद है टर्की.
Okay, next is consider the following statements. Statement 1. Recently, the USA and EU have launched the Trade and Technology Council. Statement 2. The USA and EU claim that through this, they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. Since statement 2 sounds too good to be true. Why? Because even though both are very powerful entities, European Union सारे जो European countries हो एक साथ आकर और USA as a single entity, both are powerful, but they would never come together to limit the or try to bring something under their control when it comes to technological progress and productivity, right? So therefore, this sounds too good to be true. You could have eliminated this, but the challenge lies with the first statement, right? तो अगर आप ये eliminate कर सकते हो, राइट, और इस लाइन के ऊपर आप ये लाइन को ट्रू कंसिडर कर सकते हो, राइट, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो दिया ही है, जो अगर आपको आईआर के बारे में बेसिक नॉलेज होगा कि दोनों के बीच में ऐसा कोई ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, तो देन यू कैन डेफिनेटली मार्क स्टेटमेंट 1 एज करेक्ट. बट अगर आपको इसके बारे में पता भी नहीं है, only basis the second statement you could have eliminated it just by thinking logically कि क्या दोनों मिलकर इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं कि सारा टेक्नोलॉजी और फिजिकल प्रोडक्टिविटी अपने कंट्रोल में लाए. पॉसिबल, बट इन ओनली इन रेयर सर्कमस्टांसेस. लेट्स से कोई वॉर या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है तभी जाकर ये हो सकता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता, राइट? सो देयरफॉर based on that logic you could have eliminated again, but I would say it was a moderate to difficult question, not easy to answer. So 1 is correct and 2 is incorrect. So ये उनका एम क्या है इस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का? दे वांट टू प्रमोट द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, राइट, एंड द फिजिकल प्रोडक्टिविटी. इसलिए उन्होंने ट्रेड एंड काउंसिल को बढ़ावा है, सो दैट इट कैन सर्व आवर सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज while upholding common values and strengthening our technological and industrial leadership. Okay, next. Consider the following statements. Statement 1. India accounts for 3.2% of global export of goods. Statement 2 is many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production link incentive scheme. So ये तो obviously PLI scheme has been in news for the last 2 years since the Atmanirbhar Bharat package and the COVID time. So this you could have easily marked as true, right? So therefore the option again you could have immediately said कि A और A B C के बीच में कुछ हो सकता है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है? तो इफ यू न्यू अबाउट इंडियाज एक्सपोर्ट्स कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं टोटल वर्ल्ड के प्रोपोर्शन में, तो आपको ये पता होगा कि इंडिया का तो ये एम्बिशियस टारगेट है 3% को रीच करना इन द कमिंग 5 years, राइट? वी आर स्टिल शॉर्ट ऑफ इवन 2%. ओके, तो इफ यू लुक एट द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया अकाउंट्स फॉर जस्ट 1.8%, राइट, और हमें 3% तक लेके जाना है आने वाले 5 सालों में. ओके, तो अगर आपने ये ट्रेड पॉलिसी अपनी पढ़ी रहेगी या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता तो यू कुड हैव बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कंफर्टेबली. अदरवाइज जस्ट बेसिस ऑन दिस स्टेटमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू टू गेस. ओके, तो ऑब्वियसली ये तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, ए और सी वर एलिमिनेटेबल, क्योंकि सेकंड इज नॉट anyways not a explanation for first statement. So A and C you could have eliminated, right? And the answer could have been between B and D. But if you knew कि ये incorrect है तो आप D को select करते थे. तो ऐसा आपका mindset होना चाहिए. और कहीं ना कहीं यूपीएससी ने फिर से इस क्वेश्चन के अंदर आपका मल्टी फेसेटेड एप्लीकेशन देखा है. क्या आपको एक्सपोर्ट्स के बारे में पता है? क्या आपको पीएलआई स्कीम के बारे में पता है? जो थोड़ा सा एक काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, राइट? सो दिस इज व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग नाउ for you to correlate between different topics, whether you are able to find the correlation between two different topics which are very narrowly linked or which have a kind of indirect implication on each other. This is the new trend I have been talking about. ये ट्रेंड को अभी अंडरस्टैंड करना है आपको. इसलिए मैं कहता हूँ ना कि होलिस्टिक प्रिपरेशन क्यों इसेंशियल है. इफ यू स्टडी इन साइलोज, इफ यू स्टडी इन कंपार्टमेंट्स, तो ये एक्सपोर्ट्स हो गया, ये पीएलआई स्कीम हो गया, लेकिन क्या लिंक है? पीएलआई स्कीम बढ़ने से इंडिया का एक्सपोर्ट्स आने वाले साल में बढ़ सकता है, लेकिन कितने से बढ़ सकता है? तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत जरूरी था. तो ऐसे ही आपको अभी इंटरलिंकिंग फाइंड करना है आने वाले सालों के प्रीलिम्स के लिए, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is I have also added a chart here, you can go through that, right?
Next question is, consider the following statements. The Stability and Growth Pact of the European Union is a treaty that, number one, limits the levels of budgetary deficit of the European countries of the European Union, makes the countries of European Union to share their infrastructure facilities, enable the countries of the European Union to share their technologies. तो नाम से क्या आता है? स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट. सो कहीं ना कहीं ये, अगर आपको नाम से ही आइडिया आ जाता है, तो ये इकोनॉमी के रिलेटेड है. तो इकोनॉमी के रिलेटेड तो स्टेटमेंट 2 and 3 लग ही नहीं रहे हैं. सो डेफिनेटली 1 seems to be true. Second statement, this is not that much related to stability and growth. इसका कोई लिंक ही नहीं है, right? And it enables countries of the European Union to share their technologies. तो उससे स्टेबिलिटी और ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? कुछ नहीं. तो एटलीस्ट ये लॉजिक अगर आपने यूज किया रहता तो यू कुड हैव आंसर्ड कि ओनली वन इज करेक्ट. इट इज द फर्स्ट, राइट? कि जो ईयू का क्राइसिस चल रहा है, ओके, यूरोजोन क्राइसिस, तो ये बजटरी डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ये पैक्ट किया था. कोविड के बाद जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हुई थी और बजटरी डेफिसिट्स वाज स्पाइरलिंग, so therefore this stability and growth pact was in news. Okay, next is 30. Consider the following statements. Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first ever compact, compact for international migration, the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. The objective and commitment stated in the GCM are binding on the UN member countries. The GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objective. Right? Again, if you have solved previous year's question, right, especially when it comes to United Nations and international agreements, all countries का साइन करना बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन होता है. एंड मोर ओवर व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल माइग्रेशन, बहुत सारे कंट्रीज ने तो माइग्रेशन के बहुत सारे अलग अलग रेफ्यूजी वगैरह प्रोटोकॉल्स भी साइन नहीं किए. So therefore this sounds too good to be true, right? All, none, ये सारे extreme words होते हैं. But again, you have to use these or eliminate these statements is based on case to case. There are some questions जिसमें all word use किया है तो वो correct भी होता है. लेकिन आपने, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप का थोड़ा भी नॉलेज है, जहां पर आपको पता है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन का इश्यू बहुत ही डिबेटेबल होता है, पेचीदा होता है, तो उसमें सारे कंट्रीज तो एक साथ नहीं आ सकते कभी. यू कुड हैव एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन. नंबर 2 क्या दिया है? दे आर बाइंडिंग. ऑब्वियसली नॉट. ये भी आपको अगर पता होगा कि रेफ्यूजी का किसी भी के ऊपर कुछ बाइंडिंग नहीं रहता है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे. थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी था. अनलेस एंड अनटिल यू न्यू अबाउट जीसीएम, ओनली देन यू कुड हैव mark this as correct, right? So this is correct. Therefore, the third statement is correct. Therefore, only one is the correct answer. Right? Only one statement is correct, as in, okay, that is the third one. Okay, so now these are again tricky questions, so I won't expect कि सारे लोगों को ये आएगा, right? So ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे और क्वेश्चन भी होते हैं जो आप करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, ये तो सोशल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, तो you should be able to answer because these are always part of our exam preparation. But again, I would say this was not that easy. Why? I'll tell you. Consider the following statements in relation to Janani Suraksha Yojana. It is a safe motherhood intervention of the state health departments. Number 1, its objective is to reduce maternal and neonatal, and neonatal means newly born mortality among poor pregnant women. It aims to promote institutional delivery among poor pregnant women. Its objective includes providing public healthcare facilities to sick infants up to 1 year of age. Right? So इसमें एक्चुअली क्या है कि फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, खास करके क्योंकि एक और कार्यक्रम है जिसको हम कहते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. ये क्या है? जननी सुरक्षा योजना. तो फोर्थ वाला जो इसमें जो इन्फेंट का आता है, उसमें शिशु ये वर्ड जब ऐड होता है तो वो उसमें इन्फेंट्स और मदर दोनों का एक हेल्थ चेकअप और हेल्थ फैसिलिटीज होता है. Therefore, if you knew about this slight difference, you could have eliminated option 4. नंबर 1 में क्या है कि जननी सुरक्षा योजना ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, राइट? तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, सो इट इज नॉट अ एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ स्टेट health departments. It is something which is carried out under the national rural health mission. So therefore 1 is also incorrect and 4 is also incorrect. So only 2 are correct. So if you knew कि ये national level policy है, तो स्टेट डिपार्टमेंट को शायद आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे. तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसिडरिंग
स्पेशली द फोर्थ स्टेटमेंट। और जैसे आपने पहले के क्वेश्चन में देखा है कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो आप तो इसको तुरंत इसको मार्क कर देखिए, ठीक है, अरे सारे स्टेट गवर्नमेंट तो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते ही, तो ये भी किया रहेगा। बट सिंस द स्कीम इज अंडर द नेशनल प्रोग्राम, तो इसलिए फर्स्ट वाला भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो अगेन आई वुड से ट्रिकी क्वेश्चन, not that easy to eliminate considering also these type of options which are coming up. Okay. So you have to be very particular about government schemes also. Government schemes usually used to be a bit easy to answer in the previous years, but now even that UPSC is making you trickier to answer, and you need to know all the 360-degree angle about the scheme, right? So that will make your task a bit more challenging in the coming years if similar trend is followed by UPSC. Next is consider the following statements in the context of intervention being undertaken under Anemia Mukta Bharat strategy. Right. So again, another scheme they have added with regards to the health and malnourishment. Anemia जो खास करके adolescent girls या women में होता है, right? Iron deficiency and all that. So it is something associated with malnourishment also. So statement number 1 क्या दिया है? It provides prophylactic calcium supplement for preschool children, adolescents and pregnant women. So if you knew that anemia को टैकल करने के लिए हम आयरन यूज करते हैं, तो डेफिनेटली यू कुड हैव एलिमिनेटेड वन, क्योंकि इसमें कैल्शियम नहीं होता है, इसमें आयरन फॉलिक टैबलेट्स होते हैं, जो आपने इतने हर साल ये आयरन फॉलिक टैबलेट का न्यूज में आता है। ये कभी कभी आयरन फॉलिक टैबलेट का पॉइजनिंग भी हो जाता है अगर वो एक्सपायरी गया हुआ आयरन फॉलिक टैबलेट दिया है, तो उस केस में ये न्यूज में रहता है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक सप्लीमेंट, ओके, जो एडोलसेंट गर्ल्स को दिया जाता है सो दैट दे कैन टैकल द एनीमिया। यस, सो एक और दिया गया है यहाँ पर, यस, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड कैंपलिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इट प्रोवाइड्स फॉर periodic deworming to children and adolescents. It yeah, it provides for non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, right? So yeah, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन शायद गलत प्रिंट टाइप हो चुका है, right? So only one, only two, only three, none. So first you can eliminate because that is iron supplement and not calcium. The rest all three are correct. Okay, so three statements are correct here. Okay, except the one. नेक्स्ट इज या कार्बन फाइबर्स। इट इज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक का थोड़ा सा ये पूछ लिया क्योंकि ये कार्बन फाइबर्स न्यूज में थे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोबाइल्स एंड एविएशन इंडस्ट्री। तो कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। सो अगर ये न्यूज में है और ये यूटिलाइज किया जा रहा है वाइडर स्केल पे, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि रिसाइकल हो सकता है, नहीं तो फिर लोग यूज क्यों करेंगे, right? Otherwise, it would have become very costly. So therefore, carbon fibers can be recycled. So if you knew about carbon fibers, so you could have easily answered this question. इसमें सिर्फ one is correct, this is incorrect. Okay, so answer is A, one only. Next is yeah, again related to something related to your automobile industry. Consider the following action: detection of car crash collision, which results in the deployment of airbags instantaneously; detection of accidental free fall of laptop towards the ground, which results in the immediate turning off the hard drive; detection of the tilt of the smartphone, which results in the rotation of the display between portrait or landscape. In how many of the above actions is the function of accelerometer required? तो एक्सेलरोमीटर तो अगर आप थोड़े से टेक सेवी हो तो आपको पता है कि स्मार्टफोन में तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, जिसे हम वो जीपीएस का भी हम नेविगेशन जो है हमारा ठीक से कर सकते हैं। कभी कभी वो आप गूगल मैप ओपन करते हो ना, तो आपको कहता है ना कि योर एक्यूरेसी इज लो, प्लीज ट्राई टू टिल्ट योर मोबाइल इन अ 8 शेप, right? So that is where accelerometer is also used. Even for switching between portrait and landscape mode, आप मूवी देखते वक्त आप ऐसे लैंडस्केप मोड में मोबाइल को रोटेट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन एडजस्ट, उसमें भी एक्सेलरोमीटर यूज होता है। ये भी एक टेक्नोलॉजी लैपटॉप में भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें अंदर हार्ड ड्राइव को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे ही वो मूवमेंट डिटेक्ट होता है, तो इट विल ट्राई टू टर्न ऑफ द हार्ड ड्राइव बेस्ड ऑन द फॉल। कार क्रैश विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स, उसके लिए भी एक्सेलरोमीटर यूज होता है, जिससे पता चलता है कि मूवमेंट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, जिससे वो एयर बैग्स डिप्लॉय हो सकते हैं। इट्स ऑल द थ्री एरियाज आर देयर वेयर एक्सेलरोमीटर आर रिक्वायर्ड। यूपीएससी का साइंस एंड टेक में एक ट्रेडिशनल हिस्ट्री रहा है
कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई वोंट से ऑल द क्वेश्चन, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन साइंस एंड टेक के ऑल का आंसर होता ही। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग यू शुड रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बट वॉट एवर द हिस्ट्री आई हैव सीन अबाउट साइंस एंड टेक एंड जो एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशन होता है, राइट? सो हियर ऑल आर करेक्ट। सी नेक्स्ट इज with reference to the role of biofilter in recirculating aquaculture system. तो ये जो RAS है, recirculating aquaculture system, was in news in PIB articles जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, तो उसके अंदर एक बायोफिल्टर्स यूज करते हैं। तो यूपीएससी ने RAS के ऊपर पूछने के अलावा उसके अंदर जो स्पेसिफिक बायोफिल्टर्स यूज करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, नॉट अ सिंपल वन। तो इसमें बस दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, फिश को जो फीड देते हैं वो पानी को गंदा भी कर सकता है, तो उसको हम रिमूव करते हैं बायोफिल्टर्स से। कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट इनटू नाइट्रेट। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर, राइट? तो ये जो फॉस्फोरस वाला है वो नॉट करेक्ट है, उनका काम सिर्फ नाइट्रेट का है, नॉट फॉस्फोरस का, राइट? तो अगर आपको एक बेसिक पता होता अबाउट बायोफिल्टर्स तो आप आंसर कर सकते थे, नहीं तो इट वाज अगेन आई वुड से ट्रिकी क्वेश्चन, नॉट दैट इजी टू आंसर, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड से इज, इफ यू लुक एट सच काइंड ऑफ साइंस एंड टेक में कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस डेफिनेटली थे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आप शायद डेफिनेटली आई वुड से नॉट अ हार्ड क्वेश्चन बट मॉडरेट क्वेश्चन, राइट? सो दिस वाज बेस्ड ऑन स्पेस सेफाइड्स। डिस्क्रिप्शन दिया है, जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, नेबुला, stars which brighten and dim periodically, pulsars are neutron stars are formed when massive stars run out of fuel and collapse. Okay. तो यस, तो इसके अंदर 1 और 2 का बस इसकी टोपी उसकी सर कर दी है। अगर आपने बिग बैंग थियरी और एनसीईआरटी पढ़ा है, बेसिक्स ज्योग्राफी के, तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि नेबुला क्या होता है। नेबुला इज अ जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। इफ यू could recall about basics of nebula and you have read about pulsar जो हर साल न्यूज में रहते हैं, these are neutron stars, right? So you could have definitely answered this question even if you didn't know about Cepheids, it's okay. But ये भी जब आप एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हो तो Cepheids भी बहुत बार होते हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर, but at least based on nebula and pulsars you could have easily answered. तो बस Cepheids are stars which brighten and dim periodically and nebula are giant clouds of dust and gas in space. So correctly match सिर्फ 3 है. So answer is 1 only. Okay. Okay. Next is which one of the following countries has its own satellite navigation system? तो answer is Japan, right? तो यूपीएस ने अगेन यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज टेस्ट किया है, क्योंकि जीपीएस के बारे में आपको यूएस तो ऑलरेडी पता है, बाइडू पता है, जर्मनी का है, फिर रशिया का आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया का शायद आपको, ऑस्ट्रेलिया का तो खैर अभी तो नहीं है, बट ये जो कॉमन हमारे जो 3 से 4 नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया का नाविक है जो यूपीएस ने ऑलरेडी पूछ चुका है। ये इसके अलावा यूपीएस ने पूछा है कि क्या आपको जापान का भी पता है? तो जापान का होता है क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, इट्स देयर ओन, गवर्नमेंट ऑफ जापान का एक जीपीएस सिस्टम है एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स द जीपीएस टू इम्प्रूव कवरेज इन ईस्ट एशिया। तो जो यूएस का जो जीपीएस है कि रशिया और सॉरी जापान और यूएस के अंदर बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो दे हैव इम्प्लीमेंटेड देयर ओन सिस्टम अलोंग विद जीपीएस सो दैट दे कैन इम्प्रूव द satellite accuracy or navigation accuracy rather in their East Asia and Oceania region. Okay, so ये 2023 में कॉन्स्टलेशन को एक्सपांड करने की भी बात हुई थी, इसलिए ये न्यूज में भी था, इसलिए यूपीएस ने इसको बहुत ही अच्छे से पिकअप किया ये टॉपिक को। तो इफ यू read about the Japanese expansion of satellite systems for the navigation and news, you could have answered this question. Okay, next. ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप साइंस एंड टेक का बहुत ही कम पढ़ाई करते हो। दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रूआउट देयर फ्लाइट्स व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। ये भी गलत है, राइट? दे आर नॉट जेट प्रोपेल्ड और सबसोनिक। तो क्रूज मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड, नंबर 1। ये जो क्रूज मिसाइल कौन सा, ब्रह्मोस है। तो अग्नि 5 ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, राइट? इट इज नॉट अ क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस का और अग्नि को उन्होंने
तो अग्नि और ब्रह्मोस का जो डेफिनेशन है बस उन्होंने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया है। So therefore both were incorrect. These are always in news, every year in news. So therefore this was very simple कि एक ballistic missile है अग्नि, ब्रह्मोस एक cruise missile है, और cruise missiles हमेशा jet propelled होते हैं at subsonic speeds, while ballistic missiles are rocket powered only in the initial phase. So both are incorrect, right? So relatively easy, I would say, as compared to the all the science and tech questions. Consider the following statements regarding mercury pollution. Okay. Number one, gold mining activity is a source of mercury pollution in the world. Coal-based thermal power plants cause mercury pollution. Yes, वो तो होता ही है. There is no known safe level of exposure to mercury. Yes, तीनों भी correct है. मर्क्यूरी पोल्यूशन ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट का टॉपिक पूछा है, मिनामाटा कन्वेंशन जो न्यूज में होता है, तो इस बार उन्होंने मर्क्यूरी के नेचर के ऊपर पूछा है, उसके सोर्सेस के ऊपर पूछा है. तो गोल्ड माइनिंग में डेफिनेटली यूज होता है मर्क्यूरी एक्सट्रैक्शन के लिए गोल्ड के, और थर्मल पावर प्लांट्स का भी वन ऑफ द emissions is mercury. Therefore they have also been told to add a lot of filters so that they can eliminate the mercury emissions. And ऐसा कोई अब तक सेफ एक्सपोजर लेवल मर्क्यूरी के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है. दो mercury in very small proportions is used in traditional medicine, तो लेकिन उनका कोई ऐसा लिमिट या सेफ एक्सपोजर लेवल अब तक किसने डिसाइड नहीं किया, right? Therefore all are correct. Okay, next, with reference to green hydrogen, consider the following statements. It can be used directly as a fuel for internal combustion. It can be blended with natural gas and used as fuel for heat or power generation. It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles. तो यस, ये तो हॉट टॉपिक था, मैंने बताया भी था मेरे एनवायरमेंट लेक्चर्स में कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आप डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और दो क्वेश्चन आए इस बार प्रीलिम्स के अंदर. विल डिस्कस दैट सेकंड क्वेश्चन आल्सो इन द अपकमिंग स्लाइड्स. यस, डायरेक्टली भी यूज हो सकता है फॉर इंटरनल कंबशन. नेचुरल गैस के साथ एक बेसिक क्वांटिटी ने 5% तक आप इसको सेफली ब्लेंड कर सकते हो. एंड हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल होते हैं, राइट, तो हाइड्रोजन जब फ्यूल सेल के थ्रू पास आउट होता है तो उसको आप इलेक्ट्रिक कार्स में वगैरह यूज करके आप इसको यूज कर सकते हो, राइट. सो ऑल थ्री आर द एप्लीकेशंस ऑफ green hydrogen. Okay, so this was again a simple question because this was supposed to be a hot topic and UPSC did ask about that. With reference to home guards, why this is in news? क्योंकि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होम गार्ड्स का कोई बटालियन को पोस्ट किया, इसलिए उसके ऊपर से यूपीएससी ने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होम गार्ड्स के ऊपर सेट किया है, राइट. होम गार्ड्स वर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. The role of home guards is now is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of the internal security, to present to prevent infiltration, right. यहाँ पे कुछ typing mistakes है. To prevent infiltration on the international border or coastal areas, the border wings home guards battalion have been raised in some states. How many of the statements are correct? So सिर्फ दो ही statement correct है. First is incorrect क्योंकि ये Bombay Home Guards Act extended to National Capital Territory of Delhi 1959. इसके तहत ये बनाया गया है. Therefore statement 1 is incorrect and not under the rules of central government. बाकी के दोनों भी सही है. सो इट एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग ऑक्सिलियरी, मीन सपोर्टिंग फोर्स होता है. अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अपने होम गार्ड्स भी रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आपके होम गार्ड्स रहते हैं, राइट. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. सो दे एक्ट एज अ सपोर्टिंग फोर्स फॉर द पुलिस. उनका लॉ एंड ऑर्डर से डायरेक्टली लिंक नहीं रहता जिस लेवल का पुलिस का रहता है, राइट. सो लेकिन अभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी ये कुछ बटालियंस का भी खड़ा किया, जैसे पंजाब में है 6 बटालियंस, राजस्थान, गुजरात, एंड 1 each फॉर मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी टू बीएसएफ. एवरीवन, आई होप यू नो कि बीएसएफ इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो उसके लिए ये उनको असिस्ट करने के लिए अभी यहाँ पर एक इंटरनेशनल बॉर्डर होम गार्ड बटालियन भी अभी रेज किया गया है. ओके, सो नेक्स्ट इज, this was again a bit tricky. With reference to India, consider the following pairs. Action, unauthorized wearing of police uniform. अगर कोई करता है तो इसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर इसको वायलेशन माना जाएगा. knowingly misleading or otherwise interfering with the police officer or military officer when engaged in their duties, तो इसको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत हम कंसिडर करते हैं, तो ये तो गलत है एक्चुअली.
celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others. So yes, it does come under Arms Act 2019 amendment. जो कुछ लोग celebratory gunfire करते हैं ना इलेक्शन जीतने के बाद या whatever it is, right? Even during the armed forces का celebration, अगर उसमें किसी को लग जाती है गोली तो उसको आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हम डील करते हैं. सो देयरफॉर ओनली टू आर करेक्ट. सो इसमें बस सेकंड वाला जो है वो हम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ही उसको कंसिडर करते हैं. सो बोथ 1 and 2 आर पार्ट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. अगेन ए ट्रिकी क्वेश्चन, नॉट दैट इजी, बट ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी पता नहीं. नेक्स्ट अगेन यूपीएससी का फेवरेट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो न्यूज में है, इंटरनेशनल regions often mentioned in news and reasons for being in news. North Kivu, Ituri, war between Armenia and Azerbaijan, Nagorno-Karabakh insurgency in Mozambique, Kherson and Zaporozhia dispute between Israel and Lebanon. ये भी सिंपल था अगर आप आर्मेनिया अजरबैजान का जो नागोर्नो कराबाख वाला जो एरिया है जो इतने 2 साल से कंटिन्यूसली न्यूज में है, तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते थे कि ये तो अजरबैजान और आर्मेनिया का है, तो इसमें मोजाम्बिक का कोई लेना देना नहीं है, राइट. तो मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि आपको स्टेटमेंट 1 भी नहीं पता है कि वो और इतुरी आपने सुना नहीं, लेकिन रशिया यूक्रेन में खेरसन बहुत बार न्यूज में आया है, खेरसन और जैपोरोजिया. ठीक है, जैपोरोजिया भी अगर नहीं सुना तो खेरसन भी बहुत बार न्यूज में है क्योंकि वहां पर रशिया ने एडवांस किया था यूक्रेन के उसके ऊपर. तो इफ यू न्यू एटलीस्ट अबाउट दीज टू, राइट, यू कुड हैव easily answered this कि इसमें से कोई भी पेयर सही नहीं है, therefore none of the pairs are correctly matched. So answer is D. तो ये जो फर्स्ट है कीवू और इतुरी, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, ये मैप मैंने आपको दिखाया, इटुरी एंड नॉर्थ कीवू, वहां का ये एक रीजन है, राइट, जो डिस्प्यूट में चल रहा है. और सेकंड तो मैंने ऑलरेडी बताया कि अजरबैजान आर्मेनिया का है, और थर्ड इज रशिया यूक्रेन. सो नन ऑफ द पेयर्स वर करेक्टली मैच्ड देयर. You see this, Kherson and Zaporozhia, where the Russian troops advanced in Ukraine. Okay. Next, consider the following statements. Israel has established diplomatic relations with some Arab states. The Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. तो इसमें स्टेटमेंट 1 तो डेफिनेटली करेक्ट है क्योंकि इसराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजिप्ट स्पेशली, राइट, और जो यूएसए ने थोड़ा इंटरमीडिएशन किया था, राइट, और खास करके जो इजिप्ट के बीच में एट 1979 में एक नॉर्मलाइजेशन किया था उन्होंने, राइट, एंड जॉर्डन के साथ किया था, और जो अब्राहम अकॉर्ड्स ट्रम्प के टाइम पे हुआ था व्हेन ट्रम्प वाज देयर, तो यूएई, बहरीन एंड इसराइल आल्सो resorted to the restoring of diplomatic. So everyone, those who studied about IR expected Abraham Accords to come, but UPSC ने very intelligently asked about कि कौन से so Israel has established diplomatic relation with some Arab states, definitely it's true, but क्या इसराइल ने सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया है पीस इनिशिएटिव? So no, Israel has not signed the agreement. It is still in talks, but it has not signed the agreement. So therefore, 1 is correct, but 2 was incorrect. So this was sorry. This could have been answered if you knew about the exact nature of Israel's relationship with the Saudi countries or the Arab states countries. Sorry. Next is, consider the following pairs with regards to sports award. Major Dhyanchand Khel Ratna Award. It is given यहाँ पर दिया है for the most spectacular and outstanding performance by a sports person over a period of last 4 years. Arjuna Award for the lifetime achievement by a sports person, right? Then Dronacharya Award to honor eminent coaches who have successfully trained sports person or teams. Rashtriya Khel Protsahan Puraskar. So how many of the above pairs are correctly matched? इसमें से सिर्फ 2 ही है. कौन कौन से है? That is first जो यहाँ पर दिया है, राइट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो वो करेक्टली मैच है, और द्रोणाचार्य का जो है वो करेक्टली मैच है. बाकी अर्जुना अवार्ड जो है, इट इज नॉट फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, बट इसमें भी कुछ ड्यूरेशन दिया है, दैट इज फॉर पीरियड ऑफ 4 years. गुड परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर
4 years, राइट। तो खेल रत्न ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। फिर अर्जुन अवार्ड को भी एक बड़ा दर्जा दिया गया, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। फिर द्रोणाचार्य कोचेस को दिया जाता है, शायद आप जो द्रोणाचार्य हमारे महाभारत में आपने पढ़ा ही रहेगा उनके बारे में, तो उससे हम ये अवार्ड देते हैं कोचेस को या ट्रेनीज को। एंड फोर्थ जो है इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज इसमें क्या होता है, द अवार्ड रिकॉग्नाइज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्पोरेट्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड्स इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ना कि स्पोर्ट्स पर्सन को। Okay. So if you knew about, if you're interested in sports, so you could have answered this. Otherwise, again, it was a tricky question. Next is, ये भी question expected था. Sports, as you might have seen from the last 2 years, UPSC is very fond of sports based MCQs now. तो ये क्योंकि इंडिया में हुआ था, तमिलनाडु में, तो ये डेफिनेटली यूपीएससी ने पूछ लिया क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट 2 आर करेक्ट, कि फर्स्ट टाइम इंडिया में एक चेस ओलंपियाड हुआ। और ये ऑफिशियल मैस्कॉट वाज थम्बी, थम्बी नाम का एक मास्कॉट था। एंड थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को बस उन्होंने इसकी टोपी उसके सर कर दिया है। okay? तो जो ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन उसका है हैमिल्टन रसेल, और जो वुमेन्स है उसका नाम है मेंचिक कप। ओके, तो बस उतना ही इंटरचेंज किया, इसलिए सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इट वाज अगेन ट्रिकी क्वेश्चन। ये तो खैर ठीक है, कोई भी आंसर कर सकता था अगर जिसने इंडिया के ये सारे फॉलो किए हैं चेस ओलंपियाड के न्यूज को। बट अगेन दिस टू वर ट्रिकी, आई वुड से। तो अगेन नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, बट इससे सीख यही लेना है आपको कि स्पोर्ट्स जो भी न्यूज के अंदर है आपको उसको लाइटली नहीं लेना है। यूपीएससी हैज बीन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन स्पोर्ट्स अ लॉट। Again, this was location-based question. You could have answered this if you knew about the locations in news. Donbass, Syria. Absolutely not. ये भी यूक्रेन से लिंक्ड है। काचिन, इथियोपिया, टिग्रे, यमन, तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। डॉनबास ये यूक्रेन से लिंक्ड है, राइट। डॉनबास, लुहांस, डोनेट्स, ये सारे यूक्रेन से लिंक्ड न्यूज में थे। काचिन जो है वो म्यांमार में न्यूज में था, राइट। इट इज द नदर्न मोस्ट स्टेट एंड इट्स विटनेसिंग कॉन्फ्लिक्ट विद द काचिन इंसर्जेंट्स फाइटिंग अगेंस्ट द तातमादाव, दैट इज द म्यांमार आर्म फोर्सेस, राइट। सो इसलिए न्यूज में था, तो ये मार्क भी किया है मैंने मैप के अंदर। टिग्रे जो है वो इथियोपिया के अंदर न्यूज में है, राइट। एंड यस, ये 3 ही दिए थे ना, यस तीनों भी थे, तो यमन में नहीं था, टिग्रे इज इथियोपिया। So if you knew about these locations in news, I would say it's easy to moderate, not difficult, because at least Donbass तो पता ही होना चाहिए था। Okay, next is, in the recent years, Chad, Guinea, Mali, Sudan caught the international attention for which one of the following reasons common to all of them? तो इसमें क्या हुआ, सक्सेसफुल कूप्स हुए। कूप्स मीन्स ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट बाय मिलिट्री एक्सपेडिशन। जो भी इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, वो मिलिट्रीली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते, तो सारे कंट्रीज को उनके अंदर हुआ है, इसलिए ये न्यूज में है। ये भी सिंपल था, इफ यू न्यू अबाउट दीज कंट्रीज एंड अफ्रीका। So as I told you, Africa is becoming UPSC's favorite area, right? So अभी क्या होगा नेक्स्ट ईयर, एवरीवन विल प्रिपेयर अबाउट अफ्रीका। शायद यूपीएससी नेक्स्ट ईयर पूछेगा भी नहीं, बट उसके नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है, राइट। सो देयरफॉर ऑलवेज look at previous year's UPSC trend, right? So if you knew कि UPSC is always interested in knowing about African areas and those specifically which are in news for some major reasons, तो उसको तो हमेशा याद रखना है। Okay, next. Consider the following heavy industries: fertilizer plants, oils, refineries and steel plants. So green hydrogen कहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। और तीनों भी इसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा कार्बन एमिशंस कम होता है। एज आई टोल्ड यू कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे। ये भी हमने डिस्कस भी किया था एनवायरनमेंट में कि तीनों भी के तीनों एरियाज में हम ग्रीन हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं, जिससे जो गैस और जो फॉसिल फ्यूल्स लगते हैं ये प्लांट्स के लिए वो कम हो सकते हैं और कार्बन एमिशंस भी कम हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज G20। ऑब्वियसली इंडिया हैज होस्टेड G20, तो एक क्वेश्चन एक ड्यू था ही G20 के ऊपर, तो दोनों भी करेक्ट है। द G20 was originally formed, established as a platform for the finance ministers and central bank governors to discuss the international economic and financial issues. Digital public infrastructure is one of India's G20 priorities this year. Yes. If you look at the agenda set by India, 6 एजेंडा थे, उसके अंदर ग्रीन डेवलपमेंट था, लाइफ जो एक मंत्रा दिया था प्राइम मिनिस्टर ने,
accelerated inclusive resilient growth, SDGs, technological transformation and digital public infrastructure, multilateral institutions, and women-led development. So, if you were aware about G20 and India's agenda, you could have easily answered this question. And this was definitely expected based on the fact that G20 India host kar raha hai. Okay. This I have already discussed in some of my lectures in IR. So, those who paid attention or read about this could have answered this question. Okay. Next is geography ka location based questions. Consider the following statements. Jhelum River passes through Ular Lake. तो ये तो correct है. Ular is one of the largest freshwater lakes in India. Krishna River directly feeds Koleru. तो Koleru is actually between Krishna and Godavari. Directly feed नहीं करती है उसको. Right? उसको जो seasonal Budameru and Tamere Leru streams है वो feed करती है. तो इसलिए अगर आपको कोलेरू के बारे में पता है कि कोलेरू यूपीएससी ने पहले पूछ चुके हैं, राइट, बट उसमें यहाँ पर क्या भी कंफ्यूज क्या किया कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू दैट, तो नो, तो इसलिए बस वही एक गलत है, बाकी थर्ड भी करेक्ट है, मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर, राइट, सो गंडक रिवर वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, तो जिससे ये एक कन्वार लेवल बिहार के अंदर ये बन जाता है बेगूसराय टाउन, सो इट्स अ रेसिडुअल ऑक्सबो लेक. मियांडरिंग आपको पता ही होगा ना कि जब कोई भी रिवर मियांडर होती है और देयर कम्स अ टाइम व्हेन इट मियांडर्स अ लॉट और सेडिमेंट्स के वजह से एक पार्ट उसका कट ऑफ हो जाता है विच इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक, दैट इज द कन्वर लेक, सॉरी. Okay, next is ports and what are they well known for? Kamaraj, yeah, Kamarajar Port Company, first major port in India, registered as a company. Sorry, Kamarajar Port, ये company word गलती से यहाँ पर आ गया. Yes. Mundra Port, largest privately owned port in India. Visakhapatnam Port, largest container port in India. So अगर आपको पता है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो JNPT पोर्ट है, राइट, उसका सबसे बड़ा है, तो आप ऑप्शन डी को, सॉरी 3 को एलिमिनेट कर सकते थे, राइट, जो JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, दैट इज द इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, राइट. मुंड्रा पोर्ट ये जो अडानी पोर्ट्स के पास है, डेफिनेटली इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट. इफ यू न्यू अबाउट दैट यू कुड हैव आंसर्ड दैट. एंड यस, कामराज नगर इज फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया registered as a company. Okay. So if you knew about that, you could have answered that. Again, I would say moderate level, not that difficult, but moderate level, definitely. Okay. Yes. So next question, 53. Okay. Consider the following trees. Jackfruit. उसका जो उनका साइंटिफिक नाम दिया है महुआ एंड टीक. इसमें से डेसिडुअस कौन सा है? राइट, तो सिर्फ 2 ही डेसिडुअस है. ये भी सिंपल क्वेश्चन था. इफ यू हैव स्टडीड अबाउट एनवायरनमेंट, ये डिस्कस भी किया है मैंने बहुत बार एनवायरनमेंट लेक्चर्स के अंदर, तो आई वुड रेट दिस एज अ सिंपल क्वेश्चन. जैकफ्रूट बहुत लोगों को कंफ्यूज भी हो सकता है क्योंकि आपको लगता है कि ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है तो इसको डेसिडुअस भी हो सकता है. देखिए, हर हर ट्री पानों को तो झड़ाता ही है, राइट, बट जैकफ्रूट में क्या होता है, उसके एवरग्रीन होता है, आपको लीव्स उसके हमेशा थ्रू आउट द ईयर यू विल सी लीव्स ऑन इट. Whereas teak and mahua, you will find there are seasons where they shed their leaves और वो dry थोड़े हो जाते हैं, right? So jackfruit लेकिन एक evergreen tree है. So that is the only incorrect, and the rest 2 are correct. Okay, next is 54. India has more arable area than China. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than China. Obviously, this could have been eliminated क्योंकि इंडिया का एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर हमेशा कम रहा है इवन विद कंपेयर टू चाइना. फर्स्ट तो हम आराम से करेक्ट मार्क कर सकते हैं क्योंकि चाइना भले इंडिया से साइज में बड़ा हो, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है कि चाइना का तो ऑलमोस्ट हाफ आ गया, उससे भी हाफ पोर्शन है, उससे भी ज्यादा जो टिबेटन कोल्ड डेजर्ट में आता है, तो वहां पर तो एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है. और बाकी नॉर्थ ईस्ट में वगैरह जो उनका चाइना का नॉर्थ ईस्ट है वहां पर तो मोस्टली इंडस्ट्रियल रीजन है. सो इंडिया का डेफिनेटली वी आर सुजलाम सुफलाम कंट्री, इतने सारे बायोजियोग्राफिक जोन है, तो हमारे पास एरेबल लैंड तो डेफिनेटली बड़ा है. प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया, तो अगर एरेबल लैंड बड़ा है तो ऑब्वियसली इरिगेटेड एरिया भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा हमारा. तो अगर ये लॉजिक यूज किया रहेगा आपने तो शायद आप 1 और 2 को करेक्ट मार्क कर सकते हो. लेकिन प्रोडक्टिविटी हमेशा हम एग्रीकल्चर में डिस्कस करते ही है कि इंडिया का पर हेक्टेयर पर एकड़ प्रोडक्टिविटी हैज ऑलवेज बीन लो. So therefore you could have eliminated this option and you could have marked B. That is 2 statements are correct.
Okay, so these questions require an application of what you have already read in agriculture, economy textbooks, right? तो ये बहुत सारे economy textbooks में भी दिया गया statements है. Okay, so it's a mix of agriculture or I would say agroeconomics. Okay. Okay. Next is which of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshlands, right? तो भितरकनिका जो ओडिशा में आता है वहां पर रिपीटेड फॉल्स नहीं दिखता है. मारक्कनम, सॉल्ट पैंस, नौपड़ा स्वैम्प एंड रन ऑफ कच्छ. तो आंसर इज रन ऑफ कच्छ. तो वहां पर ये हमेशा आपको मिलेंगे. तो नौपड़ा नौपड़ा इज इन ओडिशा, मरक्कम इन तमिलनाडु, राइट. तो यहाँ पर रिपीटेड फॉल्स आपको दिखते नहीं है, बट रन ऑफ कच्छ जो पूरा एरिया है वो मार्शी लैंड है, राइट. तो वहां से आपको एक ये वर्ड से ही आपको हिंट मिल जाता था कि रन ऑफ कच्छ कुड हैव बीन एन आंसर, राइट, बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन. Okay. So yes, next is ilmenite, rutile, abundantly available in certain coastal tracts of India, rich sources of which of the following? Titanium is the answer. ये अगेन ज्योग्राफी का इकोनॉमिक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है. दिस वाज इन न्यूज इन सम आर्टिकल्स, इसलिए यूपीएससी ने इसको टाइटेनियम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया. वोंट से इट्स इजी, बट इफ यू वर वेल versed about economic geography then you could have answered this. Otherwise it was again moderate to tough to know about the various ores of titanium. And titanium is a very high strength, highly corrosion resistant और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, right? तो इसलिए ये हमेशा न्यूज में भी होता है. ओके, सो या डी इज द आंसर. About 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by DRC, Congo, right? So cobalt is one of the essential minerals which we use in our e-vehicles. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उनके पास 75% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन है. तो लिथियम के अलावा यूपीएस ने इस बार कोबाल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, राइट. सो ये न्यूज में भी रहा है, कोबाल्ट माइनिंग फॉर हेल्थ रीजंस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो इसलिए भी यूपीएस ने शायद इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया. Which of the following is a part of the Congo Basin? तो कॉन्गो बेसिन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है उसमें 6 कंट्रीज आते हैं. कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डीआरसी जो अभी हमने देखा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी एंड गैबोन, राइट. सो यू इस बार अफ्रीका के ऊपर तो आई गेस 5 to 6 क्वेश्चंस तो आराम से यूपीएससी ने पूछ लिए, राइट. तो अभी लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा अफ्रीका रट्टा मार लेंगे. शायद यूपीएससी नेक्स्ट ईयर पूछे भी ना, बट कोई बात नहीं. Every continent which is in news you should definitely study, right? कुछ भी छोड़ना नहीं है ऑप्शनल में, right? This is not a graduation exam where you can leave something and prepare. ठीक है, अगर नहीं आता है तो you can leave, but if you are leaving it just because it's difficult to remember, then or you are not aware about the UPSC trend, then it's a wrong strategy. Okay, next is 59. Consider the following statements. Amarkantak Hills are at the confluence of विंध्या एंड सह्याद्री. तो सह्याद्री का कोई लेना देना नहीं अमरकंटक हिल से. तो विंध्यास एंड सतपुरा, सो इसलिए आराम से आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं. बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज. अभी बिलीगिरी आपको पता ही है कि कॉन्फ्लुएंस एट ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स साउथ में है, तो आप सतपुरा को तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे. सिसाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये भी इनकरेक्ट है. सिसाचलम हिल्स आपका ईस्टर्न घाट्स में आता है. तो ये सारे के सारे इनकरेक्ट है. दिस वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, आई वुड से. अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब है आप फिजिकल ज्योग्राफी आपका वीक है, यू नीड टू वर्क ऑन दिस. दिस वाज आई वुड से अ इजी क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दिस वाज अ बिट ट्रिकी, though you would have read about the various projects, जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है. इट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत. ट्राइलेटरल हाईवे, एशियन ट्राइलेटरल हाईवे जो है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ, उसमें दिया है मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार. बांग्लादेश में दिया है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, BCIM कॉरिडोर, राइट, विच आई डिस्कस ड्यूरिंग माय लेक्चर्स आल्सो आईआर में. इसमें वाराणसी को भी कनेक्ट करने की बात कही है उन्होंने विद कुनमिंग इन चाइना. सो इसमें से सब इनकरेक्ट है, राइट, क्योंकि ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है इसके अंदर पोरबंदर, राजकोट, समखाली, ख्याली, राधन,
नागपुर एक्सेट्रा ये सब आते हैं। इसमें डिब्रूगढ़ नहीं आता है और सूरत नहीं आता है, राइट। और स्टेटमेंट 2 में भी मोरे तो आता है लेकिन माई सॉट आता है, यू डोंट हैव चियांग माई, ओके। एंड 3 में वाराणसी नहीं है, बट बाकी के कोलकाता तक की है, इसका कनेक्टिविटी बीसीआईएम का है। तो तीनों की तीनों इनकरेक्ट थे इसमें। एक tricky question, but if you knew about the geographical location of these three important projects, you could have answered that. Okay, next, INVITs। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही था, क्योंकि ये न्यूज में था पिछले 2 साल से। नितिन गडकरी जी ने तो इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी किया था रिसेंटली, इनविट्स को। तो स्टेटमेंट क्या लिया है, लेकिन ये बजट के थ्रू ये क्वेश्चन आया है। Interest income from the deposit in infrastructure investment trust, InvITs, distributed to the investors is exempted from tax, but the dividend is taxable. Statement to InvITs are recognized as borrowers under the securitization। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। Securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security in SURFACE एक्ट, जो फॉर शॉर्ट हमने आपने शायद पढ़ा ही रहेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। इसमें से दोनों दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि ये जो इनविट एक इन्वेस्टमेंट मोड है, जिससे सरकार क्या करती है, लोगों से फंड लेकर उसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट देगी, डिविडेंड देगी, और इन रिटर्न गवर्नमेंट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करने के लिए पैसा मिल जाता है। तो उसमें डिविडेंड भी टैक्सेबल है, और अभी के बजट के अंदर उसमें ये जो इंटरेस्ट है उसको भी टैक्सेबल किया गया है, सो दैट इट बिकम्स फेयरली टैक्स्ड एज कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल एसेट्स एज वेल। ये न्यूज में था बजट की वजह से कि अभी इनकम जो इंटरेस्ट से मिलता है उसको भी टैक्स किया जाएगा, इसलिए न्यूज में था। सो जस्ट वन वाज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 वाज करेक्ट। So definitely a news-based question and linked to economy. Next is again economy-based question. Consider the following statement. Statement 1. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide have carried out interest rate hikes. Yes. ये तो आप बहुत लोगों को पता है कि आरबीआई के साथ साथ इंटरनेशनल कंट्रीज के जो भी उनके सेंट्रल बैंक्स हैं, सारे सेंट्रल बैंक्स आर रेजिंग देयर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इजी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया था, रशिया यूक्रेन वॉर से इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो फ्री फ्लो ऑफ मनी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक्स तो किए थे। सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिनेटली। सो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। So therefore A is the answer. This was again I would say simple question. Next is, yes, this was a tricky question। यहाँ पर कुछ डिबेटेबल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट 1 तो दिया है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। डेफिनेटली इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। डिबेट इज ऑन स्टेटमेंट 2। कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है डेफिनेटली। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, क्योंकि क्या होता है कि कार्बन मार्केट्स में जो हम शेयरिंग करते तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट्स को भी हेल्प कर सकता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज कार्बन मार्केट्स ऑल्सो इन्वॉल्व प्राइवेट टू प्राइवेट ट्रांजेक्शन। इट मे नॉट ऑलवेज हैव रिसोर्स ट्रांसफर और मनी ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। इसलिए अब यूपीएससी इस स्टेटमेंट को किस एंगल से देखता है उसके ऊपर इसका सोल्यूशन वेरी कर सकता है, राइट। सो 1 is definitely correct, but if 2 is correct, then answer can be A, right? That is statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is sorry, B or C हो सकता है। Statement 2 is not the correct explanation of statement 1, so it can either be B or C. Let's see what UPSC has to say on this. So it's a bit of debatable option, I would say. Next is, which one of the following activities of the RBI is considered to be part of the sterilization? तो ये भी बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट था। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई करता है, राइट, तो टैक्स एज अ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मींस जो पैसा है मार्केट के अंदर
उसको बैलेंस करने के लिए, राइट, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस कैरी आउट करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. तो sterilization is a form of monetary policy in which a central bank seeks to limit the effects of inflows and outflows of capital on the money supply, right? And most frequently involves the purchase and sale of financial assets by a central bank, and is designed to offset the effect on foreign exchange intervention, right? तो इसके लिए ये OMO यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. So this was, I would again say, easy to moderate में. Next is consider foreign markets. ये भी easy था. कैपिटल मार्केट्स में क्या क्या आता है? स्टॉक मार्केट तो डेफिनेटली कैपिटल मार्केट में आता है ये, और बॉन्ड मार्केट. ओके, ये 1 and 4 ये दोनों भी कैपिटल मार्केट्स में आते हैं. बाकी कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल कैपिटल मार्केट्स का पार्ट नहीं, राइट. सो नेक्स्ट इज 66. दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन अगेन. ये कोऑपरेटिव फार्मिंग के बेस के ऊपर थोड़ा सा पूछा था. Which of the following best describes the concept of small farmer large field, right? So if you knew about or if you would have read कि इसमें क्या दिया है, many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operations. Okay, so that is the answer, right? It is linked to kind of, I would say, a bit of cooperative farming का element है इसके अंदर. Okay, तो ये क्योंकि cooperative farming न्यूज में है, तो उसके बेस के ऊपर यूपीएस ने ये वाला क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर पूछ लिया, राइट. सो दैट वाज अ बिट ट्रिकी, आई वुड से नॉट दैट इजी टू आंसर. कोऑपरेटिव फार्मिंग लिखा रहता तो इंडिया ने तुरंत बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने तुरंत इसको मार्क कर लिया. तो ये इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे कुछ टॉपिक्स आ चुके हैं, इसलिए यूपीएस ने शायद पूछा होगा. Consider the following statements. The government of India provides minimum support price for Niger seeds, right? Niger is cultivated as a kharif crop. Some tribal people in India use Niger seed oil